हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हो, enjoy कर रहे हो अपने टाइम को। आई होप एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू आर रीडिंग एज वेल। सो आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी मूविंग अहेड विद कैपेसिटर। yesterday we started this topic, so today we will be doing some more things in capacitor and also we will be solving question. ठीक है, so first let me take you through what we did in the yesterday's class. I have given one homework. How many of you did it? For cylindrical capacitor, I asked how you will be calculating capacitance. How many of you did it? Anyone? कोई नहीं? As usual, nobody? None? ठीक है, अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, यू डू इट और नॉट। ठीक है, तुम लोग कर लेना दिल करे तो। आई मीन आई गेव यू एज अ होमवर्क, इट्स योर चॉइस, यू डू इट और नॉट डू इट। ठीक है, सो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? वी लर्न व्हाट इज कैपेसिटर. So basically, capacitor is system of two conductors separated by a certain distance. Okay, Kiran. ठीक है, so I will help you in doing that. Don't worry. So capacitor is basically system of two conductors separated by certain distance, and where this space is filled by what? Insulator that we named as dielectric. ठीक है, so this is your capacitor. And we also learned one more thing, that if one plate of capacitor has positive charge, then another plate will have same amount of negative charge. We largely focused on parallel plate capacitor because that is what is in our syllabus. But I discussed one more capacitor, spherical, just to give you an idea of if you encounter any other capacitor, then how you will be calculating C and all. Okay, and as a homework, I gave you a cylindrical capacitor so that you can practice some more. But we will encounter mostly this parallel plate capacity. But definitely, if you are going to appear in JEE Advanced and all, then you should be solving all those extra things. I mean, homework that I'm giving, extra derivation that I'm asking you to do. So those are really important to boost your confidence and your solving capacity. That is important. Okay. So let's focus on for now parallel plate capacitor. So in parallel plate capacitor, first we calculated capacitance. Capacitance was equal to what? C equal to epsilon naught A by D. And I told you capacitance is a function of two things. First is your media and another thing is your geometry. It is sorted. After that, we learned about what will be the electric field. So we calculated it and we got it sigma by epsilon naught. After that, we calculated potential difference. This is equal to ED and this is equal to sigma D by epsilon naught. After that, we calculated energy stored on the capacitor and that is equal to half CV square, or you can write it Q square by 2C. Also, we calculated force acting between plates of capacitor and that was equal to sigma by 2 epsilon naught into how much? Into sigma A. ठीक है, so this was equal to sigma square by 2 epsilon naught A. ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिराइव किया था. वी सॉ हाउ ऑल दिस थिंग्स वर कमिंग. नाउ वी शुड रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज. ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, अब आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. we so far we learned we are having a single capacitor, and if we are connecting this single capacitor with a battery, then what will happen? This positive terminal will give positive charge to this plate, and this negative terminal will give negative charge to this plate. Now, what if we have system of capacitors with us? Just like here, you see, we are having three capacitors. And one more thing I want to add here. Capacitance को हमने क्या लिखा था? Epsilon naught A by D, and capacitance has unit, and its SI unit is written as farad. ठीक है, so that I missed on. This is the SI unit of capacitance. ठीक है, चलो. So here, just see here, we are connecting
three capacitors, C1, C2, C3 like this. Now how the charge distribution will occur. अब देखो charge distribution बहुत important है. It will help you in question solving later on. So you should see things very carefully कि मैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर रही हूँ. ठीक है. So always remember that if you have a battery, one battery कैसे हम indicate करते हैं, there will be one longer line, one smaller line. Longer line का मतलब positive potential वाला, आई मीन बैटरी कैसे बनाते हैं. बैटरी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है ना. सो बैटरी में एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, एक ऐसा होता है जहां नेगेटिव होता है. सो इसका पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो छोटे वाले का नेगेटिव होता है, बड़े वाले का पॉजिटिव होता है, छोटे वाले का नेगेटिव होता है. ठीक है. पोटेंशियल का मतलब आप समझते हो. ठीक है. तो सेल बेसिकली कैसा होता है, सेल में एक ऐसा लोकेशन होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एंड सेल में एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एंड देन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनोड एंड कैथोड. ठीक है. सो दिस इज द बैटरी. तुम्हें याद बस इतना रखना है कि बैटरी का सिंबल क्या होता है. पॉजिटिव होता है, एक ऐसा सिंबल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी करंट विल कम आउट. ठीक है. अभी के लिए इतना याद रखो कि पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड से तुम्हारा क्या होगा, करंट बाहर की तरफ आएगा. नाउ करंट आने का मतलब क्या होता है, अगर तुम लोगों ने टेंथ में बेसिक चीजें पढ़ी है तो तुम्हें पता है कि करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से करंट आ रहा है आई ऐसे, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज आएगा किसी भी टाइप. ठीक है. सो हियर विद दिस बैटरी वी हैव कनेक्टेड थ्री कैपेसिटर. अगर आप ध्यान से देखो, देन दिस प्लेट ऑफ C1 कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस प्लेट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल, this plate of the C3 capacitor is directly connected to the negative terminal of the battery. So C1 का जो पहला ये प्लेट है, that will get positive charge from the battery. ठीक है. एंड सिमिलरली C3 का जो ये प्लेट है, that will get negative charge here like this. डन है. एंड सिंस वन प्लेट हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, उसके ऑपोजिट का जो प्लेट है C1 का, that will get how much charge, negative. तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना, you have to just think if on one plate, on one surface there is positive charge plus Q, then on another surface there will be minus Q. ठीक है. और ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, माइनस Q. आई हैव टोल्ड यू इंड्यूस चार्ज एंड ऑल कॉन्सेप्ट. सो फ्रॉम देयर इट इज कमिंग. अब देखो C2 के प्लेट के साथ क्या होगा. अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पे ये C1 का ये वाला प्लेट और C2 का ये वाला प्लेट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है ना. जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ, दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2, है ना, ऐसा कुछ. देखो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट बाद में तुम लोगों को क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन ना हो. तो बैटरी से इस पे चार्ज आया प्लस. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस प्लेट पे क्या चार्ज होगा, यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. तो यू जस्ट टेक दीज टू प्लेट्स. इन दो प्लेट्स को अगर आप देखो तो ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों इंसुलेटर में हैंग्ड है. ठीक है. आई मीन C2 का प्लेट, दिस प्लेट, लेट्स से दिस इज A प्लेट एंड दिस इज B प्लेट. सो C1 का A प्लेट and C2 का B plate is not connected with any battery terminal, है ना. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से C1 का ये प्लेट कनेक्टेड है एंड नेगेटिव से सिर्फ ये कनेक्टेड है. रेस्ट प्लेट्स आर नॉट कनेक्टेड विद द बैटरी डायरेक्टली, ऐसा दिख रहा है हमें. ठीक है. सो ये दोनों प्लेट जो कि बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ऑल्सो इट्स नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स. so we will call these two plates isolated system. ठीक है. आइसोलेटेड सिस्टम. अब देखो इससे क्वेश्चन बहुत बन जाता है बाद में, तुम लोग जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे ना. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ इन केस ऑफ कैपेसिटर, इट मींस द सिस्टम ऑफ प्लेट्स इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल चार्ज सोर्स. वो किसी भी ऐसी चीज से नहीं कनेक्टेड है जो उसको एक्स्ट्रा चार्ज, कहीं से भी चार्ज लाके दे सकता है. सो इट्स नॉट कनेक्टेड. एंड when these three plates were not connected to the battery, when they were not connected to the battery, then I mean there is no charge on any capacitor. C1 पे भी कोई चार्ज नहीं है, C2 पे भी नहीं है, C3 पे भी नहीं है, क्योंकि it's not connected with the battery.
एंड द मोमेंट वी कनेक्ट इट विद द बैटरी, चार्ज सिर्फ इस प्लेट पे आया और इस प्लेट पे आया. व्हाट अबाउट द अदर्स प्लेट? तो अदर्स प्लेट का लॉजिक ये होगा, देखो यहाँ पे इनिशियली ए और बी प्लेट पे चार्ज क्या है. इनिशियली इफ यू टॉक अबाउट क्यू ए प्लस क्यू बी, 0. And since the system is isolated, if this is the initial charge is 0, final charge on A plus final charge on B also has to be 0. क्यों? क्योंकि सिस्टम इज आइसोलेटेड. इन दोनों पे सम ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? 0 ऑलवेज. डन है. अब आप देखो, मैंने अब प्लेट का एक और रूल को यूज कर लो कि कैपेसिटर की अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो सामने वाले प्लेट पे इधर क्या दिखने वाला है? नेगेटिव चार्ज. So on this you give negative charge by the method of induction, and if negative charge is getting induced on the plate A, इधर positive charge accumulate होगा. And since there is a conducting wire here, समझ रहे हो, यहाँ पे ये वायर कैसा है? कंडक्टिंग वायर है. सो व्हाट विल हैपन ऑन प्लेट ए का जो राइट सरफेस है उस पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल गेट अ कंडक्टिंग वायर एंड विल ट्रेवल टू दिस बी प्लेट. और क्यों बी प्लेट पे ट्रेवल करेगा? बिकॉज दिस प्लेट हैज अ नेगेटिव चार्ज. सो दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन टू दिस प्लेट. सो हियर देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज. समझ रहे हो कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि बैटरी से निकला प्लस क्यू चार्ज, इस पे गया प्लस क्यू, इंडक्शन से यहाँ पे आया माइनस क्यू. नाउ ऑन दिस सरफेस देयर इज प्लस क्यू विच विल ट्रेवल टू C2. C2 पे चला गया. ठीक है. सिमिलरली फिर C2 और C3 के बीच में भी सेम आइसोलेटेड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट होगा. डन है. यहाँ पे मैंने इस पे इसलिए नेगेटिव बोला क्योंकि देखो यहाँ पे इस सिस्टम को ले लो, ये वाला भी तुम्हारा क्या है? आइसोलेटेड है ना. इस पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. सो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इधर ट्रेवल कर जाएगा. यहाँ आ गया नेगेटिव. अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव को रिलीज करेगा. क्योंकि ओवरऑल ये प्लेट न्यूट्रल है, टोटल चार्ज विल बी 0. दिस नेगेटिव विल देन ट्रेवल टू दिस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट. सो दिस इज हाउ चार्ज विल गेट I mean distributed in series combination. So हमें कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है? Q चार्ज यहाँ से आया था, यहाँ पे प्लस Q, इस पे भी प्लस Q दिख रहा है, इस पे भी प्लस Q दिख रहा है. सो ओवरऑल तीनों ही कैपेसिटर पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज getting accumulated is Q, Q, Q. So such sort of combination is called series combination where charge on each capacitor is what? Same. अब मुझे ये बताओ, किसी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने में प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन. इफ नॉट देन वी विल गो अहेड. यस, एनीबडी एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी के पास भी कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एनीथिंग, इट डजंट मैटर. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, लक्ष्मी छेत्रा सही है. थैंक यू, थैंक यू. अदर्स ऑल्सो यू कैन, आई मीन यू टॉक इन द क्लासरूम. ठीक है. टॉकिंग मीन्स वो वाला नहीं, हल्ला करने वाला नहीं. Talking means you should be asking your doubts or you should be communicating your things to me, right? Talking meaning that. Now we will calculate what is the C equivalent in series combination. अब चलो इसको फिर से different way में देखते हैं. So we have three capacitors like this, ठीक है? And it is connected to battery like this. Now let's say this battery has a potential difference of B. Now what happens when you say battery is there and it is connected with three devices? Here it is connected with what? Three devices. One is your C1, another is your C2, another is your C3. So whatever is the potential of battery, that will stop on these three devices. अब देखो stop करने को मैं कैसे तुम्हें समझाऊं. Suppose कर लो there is a canal and there is water coming here like this. ठीक है. सो नदी जैसी कुछ बह रही है एंड यू हैव थ्री डिप्रेशंस ऑन द वे. डिप्रेशन समझ रहे हो ना? मीन्स गड्ढे जैसी चीज है समथिंग. सो हियर द डिप्रेशन इज दिस, देन स्ट्रेट हुआ, अगेन थोड़ा ज्यादा डिप्रेशन है ऐसे, एंड देन अगेन देयर इज डिप्रेशन लाइक दिस.
अब देखो what will happen when water will flow along the way. Some water will get accumulated here, some water will get accumulated here, and also some water will get accumulated here. So treat this canal as a battery. आप इसको बैटरी की तरह treat करो and treat potential as the water. ठीक है? Again, I mean मैंने just pictorial representation के लिए example लिया है so that I can make you understand things. So the total water amount is how much? V. And it will drop on C1, C2, C3. Let's say C1 पे V1 drop कर गया, C2 पे V2 drop किया, C3 पे V3 drop किया, such that V will be equal to how much? V1 plus V2 plus V3. Clear है सभी को? Done है? Okay, किरण, ठीक है, चलो, किसी को डाउट? मैडम आगे आगे, हाँ बोलो. सॉरी, आगे बढ़ने को बोल रहे हो या फिर यू हैव सम इशू और सम डाउट? सॉरी, issue becomes a controversial word, right? Doubt is a soft and polite word, so I should not be using issue, I should be using doubt, right? Okay, someone asking to tell me again. Acha, ठीक है. Thank you for letting me know. So what I said is you have connected a battery with three capacitors. Battery has a potential and its potential is V. So this potential will drop across these three devices. So total potential is V. Somewhat it will drop on C1, some of it will drop on C2, some of it will drop on C3, such that sum of drop of all potential will be equal to the potential of the battery. Done it? So suppose कर लो मेरे पास canal में certain amount of water है and we have to accommodate this water into these three depressions. Then you will clearly say that the sum of water volume in these three depressions is equal to the volume of water contained in canal. Same thing is happening here. This is the battery having potential V. Some of it will drop on C1, some of it will drop on C2, some of it will drop on C3. So जब V का ही ड्रॉप किया है ना, so V1 is part of V, V2 is part of V, V3 is part of V, such that V is equal to V1 plus V2 plus V3. ठीक है? So basically you can say V got divided into three parts. And since it got divided into three parts, some of those three parts will be equal to V. We can add it scalarly because you know potential is a scalar quantity. So we can add it like this. Done it? Chalo. Now we will calculate. Answered it? Anybody? Chalo, I am unmuting everybody. If anyone has doubt, they can raise your hand. You can raise your hand. I will be unmuting you. Okay? I just did it for any to remove any disturbance, I would say. So if you calculate now, let's say we are calculating what? Combination. So we have three capacitors. अब देखो, अब हमें क्या करना ये है. Suppose कर लो, we want to replace these three capacitors with a system of or with single capacitor. So what is our target? Our target is that in place of showing three capacitors, we want to show just one capacitor. Let's say we can replace these three capacitors by one capacitor whose value is C equivalent. Done it? Again, this is also connected with the same battery. So we want to replace first diagram with the second one. And then we want to know the value of C equivalent. Done it? Let's say from here charge Q is coming. So V1 का वैल्यू क्या होगा? अगर आप V1 लिखो तो फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन राइट Q इक्वल टू क्या होता है? CB. So V इक्वल टू क्या होता है? Q by C. And since this on these three plates charge is same. डन है? So V1 का वैल्यू आप क्या लिखोगे? V1 का वैल्यू आप लिख सकते हो Q by C1. ठीक है? V2 क्या लिखोगे आप? V2 here capacitance is C2, charge is Q itself. ठीक है? So V2 will be equal to Q by C2. What will be the value of V3? It will be Q by C3. Now from the second diagram, since same diagram है 1 and 2, only difference is that 3 capacitor को हमने single capacitor से क्या कर दिया है? Replace कर दिया है. So here what you can say, here also Q charge is going because diagram is same, only 3 C is getting replaced by 1 C. ठीक है? So
यहाँ से V को आप क्या लिख सकते हो, C equivalent Q by C equivalent, because in the first second diagram all the potential will drop on C equivalent, because there is only one device where potential can drop. So all potential will drop here, and if here potential is V, then V can be written as Q by C equivalent, because here also charge will be what, Q. ठीक है, अब यहाँ से आप देखो C equivalent का वैल्यू हमें मिल गया 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. So from here we can calculate what, C equivalent in series. अब देखो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते थे ना, तुम लोगों को याद होगा हम लिखते थे R1 plus R2 plus R3, डन है, एंड हियर इट इज गेटिंग एडेड लाइक दिस, पैरेलल जैसा ऐड हो रहा है. सो कैपेसिटर्स इन सीरीज विल गेट एडेड as if we are connecting registers in parallel. ठीक है, so this is the formula. Anyone doubt? Anyone having any doubt? If yes, you can let me know. नो डाउट, ठीक है किरण, थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इफ वी जॉइन कैपेसिटर्स लाइक दिस. ठीक है, इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन का आइडेंटिटी क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स विल बी सेम, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. व्हाट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट्स सी हियर. यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट, ये है तुम्हारा नेगेटिव प्लेट. सो धीरे धीरे वी विल लर्न मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट. तो तुम लोग अपने आंखें और दिमाग दोनों खुला रखना. यहाँ पे देखो ये बैटरी है, मैंने इसको लिया C1, ये है तुम्हारा C2, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर C3. अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज वोल्टेज V. मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था दिस बैटरी हैज अ पोटेंशियल ऑफ has positive potential, because this is positive terminal V plus, and this battery has what, negative potential, let's say V minus. डन है. अब मुझे ये बताओ, मैंने प्रीवियस एग्जांपल में तुम्हें एक व्हाट आई मीन एक पिक्टोरियल चीजें समझाने की कोशिश करी थी, वेयर आई सो यू द डिप्रेशंस लाइक दिस, जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा. ठीक है, सो पोटेंशियल ड्रॉप तभी करेगा अलोंग द सर्किट. सपोज कर लो तुमने वी पॉजिटिव टर्मिनल से तुम चलना स्टार्ट किए, so you are walking along the circuit. So when you are walking along the circuit, potential कहाँ ड्रॉप करेगा, जहां पे तुम्हें कोई डिवाइस मिलता है. डन है. So what I want to say is, if potential here is positive, ठीक है, यहाँ पे let me show you here first. So this is the positive terminal, this is the negative terminal, and this is like this. सपोज कर लो इस प्लेट का पोटेंशियल हमने क्या लिखा, V प्लस. Now let's say this is point A, this is point A, and this is point B. So when you will move from A to B, at A, when you are at A, you can say potential is V plus. When you are at B, how much potential will be there? V plus only. Why? क्योंकि इस कनाल में तुम ध्यान से देखो, अगर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, डिलीटेड इट, सॉरी. सो वाटर यहाँ पे ऐसे था, अगर तुम यहाँ रहो और यहाँ रहो, you can say same height of water is there, right, at point A and B, because when you are moving from A to B, there is no depression where water will go down like that. ठीक है, so जब तुम A से B जा रहे हो, you are not getting any device, any electrical device, so potential will not drop, it will remain the same. So if potential here is V plus, here also potential will be V plus, here also potential will be V plus, here also potential will be V plus. Similarly here also V plus, क्योंकि जब तुम यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचे, you didn't get any electrical device, यहाँ भी आ रहे हो तो इस पॉइंट तक कुछ नहीं मिला, V प्लस. अब इसको जब क्रॉस करोगे ना, when you will cross C1 and you will go here, then you have got one electrical device. So if potential here is V plus, here cannot be V plus, it will be different. Similarly here also potential will be V plus, and here also potential is what, V plus. Now let's check here, this plate has a potential of V minus, so this point will also be V minus, this is also V minus, so this plate has a potential of V minus. Similarly this has V minus, this has V minus. ठीक है, so I hope potential drop तुम लोग सही से सर्किट के along दिखा पाओगे.
तुम समझ पाओगे कि विच टू पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल. ठीक है. Now, if you check, potential difference across C1 is how much? V plus minus V minus. So that is V. Here also it is V. Here also it is V. Because V is equal to V plus minus V minus. Okay. So here you can say clearly potential drop across these three capacitors is what is same. Potential drop is what? Same. And when potential drop is same, we say capacitor is in parallel. So here capacitor will be in parallel. अब देखो, अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? सो लेट्स से यहाँ से चार्ज निकला प्लस क्यू, यहाँ तक आएगा सेम चार्ज, क्योंकि कोई रास्ते में मिला नहीं जहाँ पे वो गिर सके. सो इधर चला गया, सपोज कर लो Q1 चार्ज. अब यहाँ से डिवाइस मिला, सो this device will get Q1 charge. Now here how much charge will go? Q minus Q1. So let's say here we are getting Q2 charge, and here how much charge will go? Let's say here Q3 charge is reaching. ठीक है. So these three plates now will have different charges. Let's say Q1, Q2, Q3. अब आप देखो, अब यहाँ से कितना चार्ज चला था? Q. So Q must be equal to how much? Q1 plus Q2 plus Q3. What do you say? It will be equal. Battery provided how much charge? Q. C1 took Q1 of it, T2 took Q2 of it, T3 took Q3 of it, then Q1 plus Q2 plus Q3 will be equal to Q. अब आप फिर से कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है. Yes, Chetra, we will be doing this. I mean, we will be solving so many questions, so you don't need to worry about it. We will be doing so many questions. Don't worry. Then अभी क्वेश्चंस करेंगे, चाप मत लो. So now what you can write here? This has a plus Q1 charge. This has plus Q2, and this has plus Q3. And similarly, it will have minus Q1, minus Q2, and minus Q3. From here, Q charge. So Q को मैंने क्या लिखा? Q1 plus Q2 plus Q3. Now Q equal to CV you already know. So Q1 को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 can be written as what? Q1 can be written as potential difference across this is V. So Q1 can be written as C1V. Q2 can be written as what? C2V. Q3 can be written as what? C3V. So here you can write C1V plus C2V plus C3V. Now let's say we want to replace this circuit with circuit like this, which has single capacitor in place of these three. So we will call it C equivalent, and here total Q charge will go on C equivalent. It will have total potential of V, because here it was potential V was there, right? So Q को आप क्या लिख सकते हो? C equivalent के टर्म में C equivalent into V. V cancel हो जाएगा. C equivalent is how much? C1 plus C2 plus C3. So when you are connecting capacitors in parallel, they will get added like this, which seems like we are adding resistors in series. ठीक है. So अभी तक हमें क्या क्या समझ में आया? सिंपल है कि जब चार्ज सेम होगा, we will say capacitors are in series. When potential will be same, we will say capacitors are in parallel. Yes, Kiran. Yes, that's true. That's true. And to understand it more, I mean, समझना तो इतना ही है, but definitely you need to practice more questions to understand series parallel combinations better. So now we will do questions. चलो, ये करके बताओ. क्वेश्चन क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इन दिस डायग्राम. अब आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा. आई विल बी लॉन्चिंग द पोल हियर. Yes, I will wait for your answers. You can tell me in the chat section also. Okay, so that I can identify who is doing what with. Again, I don't want to judge anybody. I just want to check how many of you are really doing it. Getting right or wrong doesn't matter here. Chalo, very good. I got one correct answer. That is so impressive. 3 answers so far.
Thank you so much, whoever has done it. It's great. ऐसे ही छोटे छोटे स्टार्ट क्या होता है ना, स्टार्ट यूज टू बी स्मॉल and then we grow bigger, right? So whoever has answered it, it's good. And whoever has tried other two wrong answers also, that's also great because you're trying. I always appreciate people trying. Where you are reaching, that's always not my concern actually. Sanjana, you need to think a bit more, or maybe you need to check your calculation क्योंकि आंसर गलत आ रहा है. चेक करो आप एक बार. Okay, so far 8 answers, only one is correct. Okay, let me end the poll now. और अब मैं समझाती हूँ, ठीक है. संजना नहीं. अब ध्यान से देखो. हाउ वी विल आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल. सबसे पहले टेक चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी. So I've taken here charge coming out from the battery. Here total Q charge will come. यहाँ पे कितने चार्ज आएंगे टोटल Q. How many ways are there at this point P? There are two ways. So charge will go through these two ways. Let's say in this way Q1 is going and in this way Q2 is going, such that Q1 plus Q2 is equal to Q. So this rasta, this way is the same way, right? There is no other branch where Q1 can divide. Done. So if 15 if to the 15 microfarad capacitor charge coming is Q1, then to this 15 microfarad also same Q1 charge will come, and to this 15 microfarad also same Q1 charge will go. And through this 15 microfarad Q2 charge is there. So clearly what we can see, these three capacitors are in series. Also series का मतलब ये भी होता है कि they are connected end to end. But more better way to check is by checking the charge going. अगर तुम देख रहे हो कि charge is going through the same way and on the same way there are so many capacitors, then all the capacitors on that same way will be in series. So here 15, 15, 15 are in series. So पहले क्या करो ना, इन तीनों को आप सीरीज में जोड़ लो. What will be the equivalent of these three first? So that will be equal to 1 by 15 plus 1 by 15 plus 1 by 15 because they are in series. So this will become 3 by 15, that is 1 by 5. So C dash equivalent कितना होगा? 5 microfarad. अब देखो, अब मैं क्या इस सर्किट को yes, Lakshmi, very good. So now let's do one thing. In तीनों capacitors को we can replace by 5 microfarad. So let's again redraw the circuit. So this is 5 microfarad, and then there is one more capacitor left, that is this 15 microfarad. This is 5 microfarad, and then there is this battery. अब मुझे आप लोग बताओ, this 5 microfarad and this 15 microfarad are in what? Series or parallel? Yes, Lakshmi, that is correct. They are in what? ये बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल विल बी अक्रॉस दिस and same potential will be across this. So they are in what? They are in parallel. And if, yes, Kiran, yes, Chaitra, it is in parallel, right? And now net C equivalent will be 15 plus 5. Because when in parallel, we add it like C1 plus C2. So this is 20 microfarad. This is going to be your answer. ठीक है? चलो, तो हमने कुछ सीखा कि कैसे कैसे करना है. डूइंग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. अब एक और क्वेश्चन है यहां से, देखो. ठीक है, ट्राई डूइंग इट अगेन. पहले तुम्हें जो भी सीरीज पैरेलल में लग रहा है ना, पहले उसको सॉर्ट कर लेना. ठीक है, क्लियरली जो सीरीज पैरेलल में दिख रहा है, फर्स्ट सॉर्ट इट आउट. आफ्टर दैट कंडेंस द सर्किट एंड देन अगेन गो फॉर द सोल्यूशन. ट्राई करो जैसे भी.
कर रहे हो, आई होप। ठीक है, आई गॉट वन करेक्ट आंसर सो फार एंड वन मोर दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कोई नहीं, ट्राई करो, सभी लोग कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्हेन आई विल बी डूइंग देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके व्हाट मिस्टेक्स यू डिड एंड marking mistake is more important than getting the exact answer in first go, ठीक है। बिकॉज मिस्टेक्स टीच यू मोर, ये कोई फिलोसफी नहीं है, आई मीन इट्स नॉट समथिंग बिग वर्ड जस्ट सेड, इट इज समथिंग रियली फेल्ड, so it's a real philosophy, you learn more by doing mistake, it's therefore true, ठीक है। so everyone do the mistake, everyone just solve it, try doing something, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, पोटेंशियल चेक करो, do something, ठीक है। Okay, I have got so many answers. I mean, six answers, not so many, I would say. And all answers are different almost. चलो अब एक काम करते हैं, पोल को एंड करते हैं एंड लेट्स डू इट टुगेदर नाउ। अब देखो धीरे धीरे तुम लोग कैसे मुझे आंसर बताओगे, आई नो व्हाट आई टोल्ड यू फर्स्ट, वट एवर feels just by looking at the diagram to be in series and parallel, first solve that, ठीक है। first thing first, Kiran, yes, very good. So if you see here, this 2 and this 2, whatever charge will come here, same charge will go to 2 and this 2, है ना, क्योंकि ये एक रास्ता है एंड इस एक रास्ते में कितने कैपेसिटर्स हैं, दो, सो दे विल बी इन सीरीज, दिस टू टू आर इन व्हाट, सीरीज, एंड टू टू इन सीरीज विल बिकम व्हाट, अगर मैं इस टू टू को सॉल्व करूं तो 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1, सॉरी चलो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, तो C equivalent of these two will be equal to C1 C2 by C1 plus C2, क्योंकि you will do 1 by C1 plus 1 by C2, that will be C1 plus C2 by C1 C2, उल्टा करोगे to get C equivalent you will get this same thing, so this is 2 into 2 divided by 4, so this will give you how much, 1 microfarad, so this 2 2 is equal to 1 microfarad। अब आप ध्यान से एक चीज और देखो, ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों किसमें है, जो पोटेंशियल यहाँ होगा V1, लेट से यहाँ भी V1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में देर इज नो डिवाइस, राइट, एंड लेट से हियर पोटेंशियल इज V2, क्योंकि यहाँ V1 है तो यहाँ डिफरेंट होगा, इन द मिडिल देयर इज कैपेसिटर, सो दिस इज आल्सो V2, so these two capacitors are in what, parallel, and in parallel when you will add these two will become what, C1 plus C2, that is 4 microfarad। तो हमने दो को सॉर्ट किया, अब सॉर्ट कर लिया है ना, उसके बाद सर्किट ड्रॉ करो, ऐसे किया मैंने सर्किट को ड्रॉ, यहाँ पे ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा बताओ, इस टू टू को क्या लिखोगे, 1, तो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, इसको मैंने कर दिया 1, ठीक है, and after that there is one here also like this, then there is this capacitor 2, and then this 2 2 has become 4, so इसको एक कैपेसिटर लिखो 4, and then this is this, and then this is this, ठीक है, and then this is point B। जब भी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं ना दो पॉइंट के बीच में, here we have to calculate capacitance between A and B, तो A and B के बीच में हमेशा बैटरी कनेक्ट करके देख लेना चाहिए। Why we connect battery? To check what will be the charge distribution and potential thing। अभी देखो आप लोग को एक चीज और ध्यान से दिख रहा होगा, वो ये कि this 1 microfarad and this 1 microfarad are in what, बताओ, ये 1 1 किस में दिख रहा है तुम लोगों को, क्या दिख रहा है बताओ, this 2 1 1 are in what, yes, किरण सही है, पैरेलल है, तो ये 1 1, yes, थानुस tell me your doubt, I need to unmute you. Okay. I've asked you to unmute. You can do. Sanjana, yes, correct. Parallel में। Yes, parallel.
दैट्स ग्रेट. सो दिस इज पैरेलल. अब एक काम करो, फिर से सर्किट को रीड्रॉ करो. अभी मैं इतना स्टेप्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यू आर न्यू टू द आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन सारी चीजें लिख रही हूँ. अब देखो ए पॉइंट था, ए पॉइंट से एक कैपेसिटर ये है जिसका सॉरी मैंने यहाँ पे गलत ड्रॉ कर दिया है. अगर ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर, सॉरी आई हैव डन योर मिस्टेक राइट. दिस कैपेसिटर, दिस इज लाइक दिस, है ना. ये था तुम्हारा पॉइंट ए. डन है. सो दिस इज ए एंड यहाँ से कैपेसिटर एक आया, दिस वन, दिस इज हाउ मच 2. सो लेट्स से दिस इज 2 and this one will become 2. Let's call it 2, this 2. And then there is no other thing here. And then here there is what? Then here there is 2. And then here again there is 4. It's like this. And then there is this capacitor, this. अब ये हो गया तुम्हारा A and ये था B, ऐसे. ठीक है. अब आप बताओ क्या क्या सीरीज में है, क्या क्या पैरेलल में है. दिस टू आर इन व्हाट? सीरीज. ठीक है. एंड दिस टू एंड दिस फोर आर इन व्हाट? अगेन सीरीज. ये दोनों सेम रास्ते पे है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों, ये तीनों सीरीज में है. तो दो 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 इन सीरीज विल बिकम हाउ मच? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 3/2. उसका ऑपोजिट करोगे 2/3. सो इन तीनों के सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी योर 2/3 माइक्रो फैराड. एंड व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू? 4 और 2 का सीरीज में करोगे तो क्या होगा? 4 इंटू 2/4 प्लस 2, दैट इज 6. सो दिस इज इक्वल टू 4/3. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, अब देखो फिर से मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ. यहाँ पे ये सारे 2/3 में रिड्यूस हो गए, ये सारे 4/3 में रिड्यूस हो गए. ठीक है. एंड दिस इज लुकिंग लाइक दिस एंड दिस इज पॉइंट बी. दिस वॉज योर पॉइंट ए. कौन सा था चेक करने दो. यस, दैट इज योर पॉइंट ए. अब इसको आप ऐसे ड्रॉ करो. अब आप क्या देख पा रहे हो ये बताओ. अब 4/3 और 2/3 अब किस चीज में है बताओ? सीरीज है या पैरेलल है? 4/3 और 2/3 किस चीज में है? एनीवन? यस, फास्ट. दिख रहा है किसी को? यस संजना, आई कैन शो यू द प्रीवियस डायग्राम. तुम लोग जब मैं डायग्राम बना रही हूँ ना, यू शुड ऑल्सो ड्रॉ इट. आई मीन यू कैन. ठीक है. चलो आप देख लो एक बार सही से. ये 2 और ये 2 और ये 2 इसको मैंने एक में लिख दिया है, और ये 2 और 4 को एक में लिखा है. सो इधर एक कैपेसिटर दिखेगा और इधर एक, इसलिए मैंने इधर एक बनाया 2/3 और इधर 4/3. ठीक है. दीज टू आर इन पैरेलल, यू कैन से. ये पॉइंट को 1 मान लो. लेट्स से दिस पोटेंशियल इज V1. सो दिस पॉइंट ऑल्सो इज पोटेंशियल V1. डन है. And this point also has potential V1. Let's say this point has potential V2. So this has potential V2 and this also has potential V2. So difference between these two, potential difference between these two capacitors is what? Same. तो C equivalent अब इस पूरे का कितना होगा बताओ? इस पूरे का हो जाएगा 2/3 plus 4/3 and that will give you 6/3, that is 2 microfarad. अब हमारे पास डायग्राम में क्या बचा? सिंपल है, अब कुछ नहीं बचा. ए पॉइंट था, यहाँ से एक कैपेसिटर निकला, इस पूरे का वैल्यू हो गया 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. देन यू विल कम बैक टू बी. अब यही दो बचा ना, एंड ए एंड बी के बीच में अब आप कैपेसिटर प्लेट सॉरी बैटरी ऐड करो. दीज टू आर नाउ इन सीरीज. तो 4 6 एंड 2 सॉरी 2 एंड 2 था ये. Yes, 2 and 2 in series. That will become 1. तो correct answer should be A. और जो कि कुछ और आ रहा है, मैंने क्या ऑपोजिट कर दिया? अच्छा, C का वैल्यू नहीं गिवन है, सॉरी. C का वैल्यू नहीं गिवन है, क्वेश्चन कुछ और है, सॉरी. दिस इट्स वैल्यू इज गिवन एज C. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये तुम्हारा C है, एंड देन यू हैव टू देन इट इज सेड दैट C equivalent is given, that is 0.5 microfarad. Then we have to calculate value of C. So C equivalent is given half microfarad. Done.
सो अगर सी इक्विवेलेंट आप निकालोगे, आप क्या लिखोगे? 1/c प्लस 1/2, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 1/2. ओके, व्हाई दिस इज कमिंग 0? ओ माय गॉड, कहाँ पे उल्टा किया? चलो मैं एक बार ना सर्किट को ऐसे खुद से देख लेती हूँ, क्या क्या गलती कर दिया मैंने। वैसे तो एक्सप्लेन सारा सही किया है, एक सेकेंड कैलकुलेशन चेक कर लेंगे. दिस टू टू आर इन व्हाट? Two in series, they will become how much? They will get added like parallel. So 2 into 2, 4, divided by 2 plus 2, 4. So that will become 1. 1 will become 2. 2 is 4. And this is 1. 2 and 1 is 3. ठीक है, यहाँ मैंने गलती किया है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर मैंने लिख दिया, समझ रहे हो? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख के सॉल्व कर दिया, देन ऐसा आंसर आ गया. ठीक है, 3 टाइम्स आ गया संजना. यस यस यस, तुम लोगों को तब मुझे बताना चाहिए था, तुमने तो कुछ बताया नहीं. देखो, गलती आ गया ना, आंसर गलत आ गया. अब आप देखो, मैं सही कर देती हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ अब, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया. इतना एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत है नहीं, अगर दिखने लगे तो. सर्किट दिखता कब है? व्हेन यू प्रैक्टिस मोर. सो दिस टू इन पैरेलल, दिस इज 4. This two in series is 1. This one in parallel is 2. So this whole is 2. This two in series will become 1. So this whole is 1. ठीक है, and this is 4, this is 2. 4 into 2 by 6 in they are in parallel. So this will become how much? 4 by 3. And 4 by 3 and 1 in series. So 4 by 3 plus 1, this you will get 7 by 3. And 7 by 3 and C are in series. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये 7 by 3. इस डायग्राम को अभी नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट मत करो, मैं इसको वैल्यू ही चेंज कर देती हूँ. So this value is how much? This is 1. ठीक है, so this is 7/3. अब आप एक काम करो, 7/3. So now I will solve it. 1/c is equal to half minus 3/7. ठीक है, तो हाउ मच वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट? सही किया है ना मैंने? अभी चेक कर लेना एक बार फिर से. सी, टू टू किया मैंने. टू टू इन सीरीज, दैट इज फॉर श्योर 1. अच्छा, किसी ने और फिर सजेशन दिया, चलो सही है. 11/14. अच्छा, बट यहाँ तो आंसर 6/5 दिया है ना, तो वी आर डूइंग सम मिस्टेक आई गेस. कहाँ कर रही हूँ पता नहीं. यस, मे भी ऑप्शन गलत हो सकता है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो कहीं भी है क्या? चेक करके देखते हैं. सो लेट मेक दिस 2. लेट्स राइट हियर 7. 7. 7 minus 3 is how much? 4. 4/14. So we are getting 2/7. 7/2, which is nowhere in the option, right? किसी का डी आया है तो बहुत सही. मैं एक काम करती हूँ, सारी चीजों को डिलीट करती हूँ, फ्रेश लिखती हूँ, क्योंकि बहुत सारा डायग्राम हो गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा. तो एक काम करते हैं, ये टू मेरा क्या हुआ था? 2 in series will become 1. So this is 1. 1 will become 2. And this 2 will become 1. So मेरा यहाँ है 1. Now I will come to this branch. 2 is 4. 4 into 2 is how much? This is your 4/3. So this is 2 and this is 4/3. This is 2 and this is 1. It is like this, and then there is one capacitor here. अब आप इसको देखो, 4/3 and 2 are in parallel. So 3/4 plus 1/2 you will write. So this will become how much? 5/4. ठीक है, so this is 5/4 and 1. They are in series parallel. So 5/4 plus 1 करोगे, अब ये कितना हो जाएगा? 9/4. And 9/4 and 2, they are in series. So 1/c equivalent is equal to how much? 1/c1 plus 1/c2. C equivalent is how much? 1/2. So this will become 2 actually, है ना? And 1/c1 is 1/c plus 1/c2. That will become your 4/9. So 1/c को अगर आप लिखते हो तो 2 minus 4/9. And 9 into 2, 18. 18 minus 4, 14. 14/9. Oh God.
ठीक है, पता नहीं कौन से कैलकुलेशन को मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि एक बार गलत होता है तो फिर गलत ही होता जाएगा। कोई पॉइंट आउट कर सकता है क्या यहाँ पे? वी एट लॉट ऑफ टाइम इन दिस क्वेश्चन, क्या गलत जा रहा है? अच्छा, एक एक काम करते हैं, 1 मिनट हम सब मिलके शांति से इसको देखते हैं। तो लेट मी सी, यू ऑल्सो सी इट। यस, हेलो, क्या दिख रहा है तुम्हें, मुझे बताओ। आई एम नॉट एबल टू सी इट, कहाँ गलत कर रही हूँ? वन कैपेसिटर नहीं है मैम, कहाँ नहीं है यार, मैं क्यों बार बार लिख रही हूँ फिर? ओके, लेट मी चेक, ठीक है, मेरे को 30 सेकेंड्स दो बस। यस, आई गॉट द पॉइंट, आई गॉट इट। देखो यही होता है ना, मतलब सुबह से जब क्लास में इंगेज रहो ना, दिमाग कम काम करता है। और देखो मैं कुछ कुछ लिख रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, ये तो हमने 4/3 लिख दिया ना ऑलरेडी। सॉरी यार, क्या कर रही हूँ। उफ, तो यहाँ से अब आप लिख डालो यार, सॉरी। So what this will become, 4/3, one in parallel, 4/3 plus 1, so that is 7/3. And this is C, right? So 1 by C plus 1 by this, that will become 3/7 is equal to 2. ठीक है? So 1 by C, again पता नहीं, गलत आएगा तो अब मैं नहीं करने वाली हूँ इसको। 1 by C is equal to how much? That is 14 minus 3, 11/7, 1 by C. So C is equal to 7/11. तो मैंने आंसर ए लिख दिया, एक्चुअली ये गलत होगा, आंसर विल बी दिस। ठीक है, थैंक यू फॉर द हेल्प। यस, सानू, करेक्ट है। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मुझे समझाना था एक्चुअली, आई कंज्यूम सो मच ऑफ टाइम इन दिस। एनीवे, मॉर्निंग, व्हाट मॉर्निंग यू सेड? It's not morning. The weather is quite cloudy here, and I don't switch on light because it reflects and then it really pierces my eyes. So I prefer working in daylight, and इसलिए मैं on नहीं कर रही that light thing. If you are getting idea of this is morning, this is not morning. I'm also in India, so here also it is evening. चलो, distribution of charge and plates कैसे distribute करते हैं? Suppose कर लो, somebody is saying you, there are two plates. Here there are two plates, green, right? One is given a charge Q1, another is given charge Q2. How many surfaces are there? This is surface 1. Let's say this is surface 2. This is surface 3 and this is surface 4. So charge के पास, अगर अगर तुम्हारे पास, अगर मैंने दोनों प्लेट को Q क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिए होते तो प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इस सरफेस पे प्लस क्यू चला जाता और इस सरफेस पे माइनस क्यू आ जाता। एंड देन वी वुड हैव स्टेट लाइक दिस प्लेट, दिस साइड ऑफ प्लेट हैज नो चार्ज एंड ऑल्सो दिस साइड ऑफ प्लेट हैज नो चार्ज। बट हियर वी आर गिविंग टू डिफरेंट चार्जेस, Q1 and Q2. हाउ वी विल डू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आई वुड से, सो यू शुड डू इट। और देखो एक चीज और मैं बोल दूं, टाइम एक्चुअली हो रहा है तो मैं, तुम लोग लीव करो उससे पहले मैं बता दूं, एससी वर्मा बुक खोलना, उसमें जितने भी कैपेसिटर के डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, सर्किट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, दैट विल स्ट्रांगली improve your circuit concept, so that's very much suggested. प्लीज डू दैट। अब चलो यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, let's assume surface 1 has a charge of small q. Surface 1 has a charge of what? Small q. Okay, tomorrow there won't be class because tomorrow this is Sunday. तो तुम्हारी छुट्टी हमारी छुट्टी, we both will enjoy. ठीक है? So this surface has a charge q, and this surface exactly has how much charge? कैपेसिटर के रूल से देख लो, कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा, अगर इधर चार्ज है प्लस क्यू तो इस पे चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू। लेट्स यूज द सेम लॉजिक। So if I am saying surface 1 has charge q, surface 3 will have charge how much? Minus q. ठीक है, ऐसे किया, अज्यूम किया है स्मॉल q।
अब देखो इस प्लेट पे, इस टोटल प्लेट पे कितना चार्ज था, कितना दिया था मैंने, Q1। Q1 का स्मॉल q गया सरफेस 1 पे, Q2 पे टू सरफेस पे कितना जाएगा, Q1 माइनस Q, क्योंकि उसका Q चार्ज गया ऑन द सरफेस 1, ऑन सरफेस 2 Q1 माइनस Q चार्ज विल गो। What about surface? What about plate? Second plate. So on third surface there is minus Q charge. Let's say on this surface there is Q dash charge. So Q dash minus Q will be equal to how much? Q2 by conservation of charge. So Q dash is equal to how much? Q2 plus Q. So here how much charge is going? Q2 plus Q. तो मैंने ये बोला कि इसको तुमने चार्ज दिया था Q1, इसको दिया था Q2, मैंने ये अज्यूम कर लिया इस पे चार्ज गया Q, देन बाय कैपेसिटर रूल इस सरफेस पे चार्ज आएगा माइनस Q, एंड देन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल दिस सरफेस विल गेट चार्ज Q1 minus Q, and by conservation of charge principle again this surface will get charge Q2 plus Q. और अगर तुम देखना चाहो कि conservation principle is holding true or not, you can do one thing. Let's say this is surface 1, 2. So sum of charge on surface 1 and 2 क्या है? Q1 minus Q plus Q. That is Q1. That is total charge on the this plate. Similarly, you check on this. Sum of charge on surface 3 and 4 is how much? Q2 plus Q minus Q. That is Q2. So that was the charge we gave to second plate, Q2, right? So this is the distribution we will do. After the distribution is done, what is our task? Our task is to calculate the value of Q. अगर मुझे value Q का पता हो, then we can exactly say how much charges are there on surface 1, 2, 3, 4. क्योंकि Q तो हमने assume किया है ना, Q is a variable value that we have taken. So we need to calculate a small Q. In the next class, we will do this calculation, but I highly suggest everyone to get it done in your house or in your home. House means hostel का house मैं बोल रही हूँ. You can discuss among your friends, you can do it, or you can sit alone, you can think and do it. I will tell you to use one concept, और वो concept ये है कि these two plates are conducting plates. ठीक है, ये दोनों ही conducting है. Try calculating electric field at any inside point of the plate. At that inside point, electric field will be zero because this is a conductor. Done है. So in terms of surface charge densities of four surfaces, try calculating electric field at inside point and equate that electric field to zero. You will get the value of small q. Okay, chalo. Okay, bye everyone. Bye bye. Anyone has any doubt, let me know. किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट, you can let me know. Kiran, bye bye, tata. MN, what's your name? Can you let me know? Thank you, Lakshmi. Thank you, everyone. कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर डाउट नहीं है देन आई विल बी क्लोजिंग द कॉल, ठीक है, और क्लोजिंग द क्लास. अच्छा, 4/3 कैसे आया ये एक्सप्लेन करूँ? हाँ बिल्कुल करूंगी. लेट्स लेट मी टेक यू देयर. सो ये 4/3 पूछ रहे हो ना संजना? चलो मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, एक काम करो, यू कैन स्पीक, ठीक है. इसमें हाँ यही है ना. तो एक चीज देखो यहाँ से ध्यान से, इस वाले प्लेट में यहाँ पे जाओ. अच्छा, ये तुम्हें समझ में आया ना कि 2 2 4 हुआ है ना? सो अगर तुम्हें वो समझ में आया है तो उसके बाद ये 2 है, एंड देन देर इज दिस 4, है ना? इस ब्रांच को मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, उसी ब्रांच को ड्रॉ किया है. तो दिस 2 एंड दिस 2 बिकेम 4. दिस 4 and 2 आर इन पैरेलल, सॉरी आर इन सीरीज. सीरीज में हाउ वी ऐड? सो यू विल राइट 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2. सो 1/c इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/2. अब देखो इसको डिनोमिनेटर सेम कर दो, सो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, दिस बिकेम 3/4. So C equivalent is what? 4/3. That is why I've written this here.
क्लियर है संजना? या और कोई डाउट है तो बताओ। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन देन। इफ किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। बाय संजना, बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट नहीं है, चलो। चलो देन वी विल बी क्लोजिंग द क्लास। Everyone enjoy your Sunday. Do more number of questions. Bye. Take care.